soon, you will start feeling the changes in that direction. My name is SAMAA from Harvard Business School. So I'm one of the few who plan on flying the next day back to Pakistan right after graduation. So my question, of course, with that background would be about the financial policy. I've been following Pakistan's financial position in the recent times. Luckily, we were able to secure the IMF thanks to the team efforts. I think Mr. Sadar did a great job in negotiating that. But then again, like, how many times do we have to go to IMF? How many times do we have to go to external sources out there? I just have a question to you about your next, couple of months, couple of years. May your tenure be a great sign for Pakistan's financial success. How do you plan, or what are your plans regarding the structural reforms when it comes to rebuilding Pakistan and bringing Pakistan back on that track where our forefathers, once lived in, and where our children will be proud of living in a nation, and we will be proud of being a self-sustainable nation? Well, inshallah, I'm pretty much certain that you will be proud of yourself and your forefathers and the values they believed in and they represented. In short, IMF, I wonder why it is being treated as foe. It's not a foe. Neither is it a friend. The real foe is our expenditure habit and the way we generate revenue. So if we want to survive as a society and a state, we have to alter both. Rationalize our expenditure the way we govern these people, and we have to change our ways. How do we generate revenue? We are a country whose tax ratio to its GDP is around 9%. So if 9% of the people are contributing towards that huge gross domestic product, so what would be our economic and financial situation? So how do you do that? We are trying to contribute in our limited stint, which we understand it's a constitutional order and it would be there for a few months. How to bring non-documented economy and enhance the tax network? That is the answer. This is one. How do we invest in our human resource? Do we manufacture goods, or do we develop our individuals and sell services? So these are the two areas on which broadly we will focus. It has details. We don't have the time for that how do we realize those. But the general contours, we do understand that these are the two areas where we have to focus. Pakistan is gifted with the natural resources. When we talk of natural resources, people probably think that we are just talking about the mineral resources. Well, it's not just mineral resources. We are a country of talented people. People like yourself and many others who are part of this group. I'm sure the Pakistani American diaspora is a success story in itself. Every second American knows Pakistan not through OBL, but through their GP, through their doctors, and they are the one who have been invested by us. They're the medical graduate. If you want to produce a medical graduate in US, wow, how much you have to invest in it? $2 million, $3 million, somewhere there. We do it for $5,000 in 5 years. So that investment part in which you are able to produce a paramedic or a medical profession is not invested by the United States. It is done by us, and it's pretty much cheap. And then we invest them in your system, and you pay for their services. They do earn from that, but at the same time, you're benefiting in which we are investing here back home. The problem is it is not being realized that this is a two-way partnership. We should focus more on that.
more producing skilled, semi-skilled, high-tech. It is an era of AI and the rest. So we need to put in more into our human resource. One of the very famous couplet of Iqbal, I'm sure you can translate it to the rest of your colleagues who are American Americans. Well, you're all American Americans, but I'm just saying it on lighter note. अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा. It's a couplet of our national poet in which he expresses that the destiny of the nation is collectively in the hands of people. And each and every individual is like a star towards that destiny. So this has been said around 100 years back when there was no concept of human resource development. But he hinted towards the human resource development, that everyone amongst these people are stars. And these stars can lead us towards a very bright future. They are the one who would be enlightening us, who would be guiding us, who would be telling us, who would be inspiring us. And I'm sure a few amongst them are sitting under this roof. And inshallah, people will contribute, and I'm very much certain that we will get out of this quagmire. It's a message of hope. There was a time when the Israelis faced a financial crunch, and the inflation rate in the late 70s in Israel was around 1,000%. But they sat there, they put in the right policies, they focused on recovering their economic woes, and they did it. And I'm sure we're going to do not just that, but we're going to do better. Yes, please. Yeah, you. My question is regarding the future of democracy in Pakistan. As is evident from our history, we've experimented with different kinds of political systems, and they've not always been successful. For the past 2 to 3 terms, we've been a democratic country, but in the 7 decades that we've been free, there has not been a single democratic government that has completed a term. But when we look at our neighboring country of India, they have a thriving democracy. What do you think is the future of democracy in Pakistan, and when can we expect a government that would actually complete its term? Well, first of all, the completion of tenure of any government is not, or incomplete completion of the tenure of a government is not at all undemocratic. The democracy gives guarantee to the strength of the parliament. And in Pakistan's case, last 15 years, post-2008, we had 3 successive complete stints of parliament. And in Westminster model of democracy, you do change the governments through parliament, through constitutional means, and that has been the case in Pakistan. In order to avoid purge and a coup, have to agree on this principle that the members of the parliament has the inherent right to emplace a government or replace a government. So I have not seen any act in last 15 years where the case has been the otherwise. Secondly, to the broader question of what is the future of democracy in Pakistan, the bigger question is what is the future of democracy at a global scale? And there are scholars back in West also, I mean, many of you probably would have read how democracies die. One should read that, one should learn through that. And there is another reference of Shirley Brahman. She teaches at Columbia. It's a case study where some 20 countries or 10 countries have been picked from Western Europe, and 300 years of democratic experience has been documented, and how
the dictatorships have been morphed into democracy. It's a very interesting read. People like yourself, you must go through that. And in that you do realize that democracy is a process, not an event. And how does the German unification occurred? How does the English experiment occurred? How does the Spanish experiment occurred? How does the Italian experiment occurred? It's a guide for the transitional democracies. And then when you generate the conversation about democracy, there's a very important angle that you want to create a liberal democracy or an illiberal democracy. Yes, in our neighborhood, the ritual of democracy is being exercised for the last 7 decades. But is it heading towards electoral autocracy? That is the question which needs to be focused more. And is it leading towards liberal democracy or an illiberal democracy? But is it this kind of democracy you would envision and you would want to have for United States of America? Fair enough. Or United Kingdom or France? Is this the old principle of laissez-faire, the French secular constitutional principles? I don't think so. So bringing it back to our region and then to our country, we are committed and we understand that the performance and participatory idea of democracy is what is needed. We would encourage that. We would try to realize that. But at the same time, when you have to strike a balance, there is a rule of law and then there is a rule of order. That social order can never ever be compromised for a rule of law. Sometimes, there are many scholars in the world which tells you that you have to operate in the law while outdating the law, when you would be operating in emergency laws. It's a wholesome idea. It's an entire discipline which is being taught in different universities, that when there are extraordinary situations, how does the normal law operate? In Pakistan's context and in our experience, there are times where the normal laws get suspended, or the normal laws are not fully implemented, or the normal laws are not solution to the kind of challenges we face, like our security challenge. Where do you think that if we would have applied our normal policing laws, we would have countered suicide bombings, which, by the way, have happened in thousands of numbers? Of course not. So then the priority is that first you secure life. When you secure life, you secure social and political order, then later on you go for the issues of civil liberties, democratic principles, so on and so forth. So you have to strike a balance. And the entire arrangement of the universe, to be honest with you, if I observe it and if I try to comprehend it and want to express it in one single word which can reflect its basic principle of existence, and that is balance. Go. Thank you so much for having us. My name is Rida. I'm from Karachi and I'm also an MBA student at Harvard Business School. Like Osama, I also plan on coming back to the country after graduation. Welcome back. Inshallah.
My question to you is, people like us, most people decide to stay back in the States or abroad after completing their education or if they go abroad for work, which is resulting in a talent drain in the country. You can say that some of our most educated, talented individuals are actually not residing in the country but are abroad. What do you think are a few measures that we can take to tackle this challenge? And what can we do? What is our role in this? And how can we encourage our peers to also come back and give to the country and serve the country that we love so much? Thank you. I'm being trolled on Twitter for the last 48 hours on one of the comment which was incomplete, which I exactly tried to explain this phenomena. And I'm glad that you have raised it again. First of all, for me, the people who choose to remain either in the United States of America or in Europe or in Australia, anywhere in Western Hemisphere mostly, it's not a challenge. It is an opportunity also at the same time. They go there, they contribute positively to their host societies, they become the bread earners to their families, and indirectly we benefit from their remittances. So I hardly see it in negative terms when the young people are going towards the Western Hemisphere, trying to grab opportunity over there, trying to prove themselves. Their individuality shines over there. It has to offer so much in terms of opportunity. Why do I have to take it as a challenge? I think so I should be encouraging it. I should be promoting it. I should be supporting it. It is a skewed angle where people talk about it and they say that, oh, people are living out of despondency. You may be not that comfortable or happy about a situation back home, that's fine. And even if that is one reason of exercising that choice to leave this country, probably is minimal. Is this for the first time that the youngsters are leaving Pakistan? Of course not. We've been leaving this country since 1947. Every month, every year, every decade, people go. How is it a new phenomena? It's a normal phenomena. For me, it's pretty much normal. And whosoever wants to come back is very much welcomed. It is an individual choice which should be supported either way. You become an effective and contributor as an individual, either you are here or in your home of choice. This is your natural home, that becomes your home of choice. For me, the more important thing is that wherever you are, you should be successful. You should realize the full potential of your talent. You should reach the zenith of any profession you choose. That is more important to me. If you are a redundant, non-productive individual, either home or abroad, that is a challenge. And that is a huge challenge. So let's bring the conversation into its right spirit, into its right angles, and you could contribute to that larger, bigger and huge conversation. Let's talk sense instead of just responding hysterical towards that, being hysterical towards that. Indians went in 1960s to US and rest of the Western Hemisphere. Everyone called that a brain drain, that, oh, the people have left and they have said, who's going to run India? And after 30 or 40 years, the whole of that lot has returned as brain asset. They earned capital, they developed expertise. So if there would have been a negative relationship between that projected Indian diaspora and back home their governments, what sort of relations they would be having? I mean, there are challenges still
between that community and the governments both. There would be issues with us as well. But at a larger scale, a potent individual is beneficial anywhere on the planet. Thank you so much for being here. Thank you so much for seeing a new or at least different face of Pakistan. And I'm sure all of you would be our public ambassadors. Thank you so much. निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा गया पाकिस्तान में जमहूरी अमल तसलसल से जारी है, जमहूरियत ही पार्लियामेंट की मजबूती की ज़ामिन है। क्रंच, क्रीम और फ्लेवर का ट्रियो। इन रस्तों पर मिले मुख्तलिफ फ्लीट मैनेजर्स, कितने ही ड्राइवर मिले जिनके साथ मिलकर हर रास्ता अबूर किया। ये वो ट्रक ही था जिसने इनका साथ निभाया। अगर नहीं बदलता तो कैल्टेक्स डेलो पर हमारा एतमाद और यकीन, एक काबिल भरोसा हमसफर कैल्टेक्स डेलो, जो पहुंचाए मंजिल पर। And poppers. Try now. खरीदो आजादी पैक। मैप डूडल निकले तो पैक के पीछे मौजूद कोड करो स्क्रैच। 032122113839 पे बिस्कॉनी स्पेस कोड लेकर करो व्हाट्सएप। जवाब आने पर मैप डूडल की पिक्चर सेंड करो। बम्पर प्राइज, उम्रा टिकट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। चावला एल्युमिनियम सिर्फ साउंड प्रूफ ही नहीं बल्कि डस्ट प्रूफ भी है। डस्ट अंदर आएगी तो डस्टिंग होगी ना। चावला एल्युमिनियम, अंदर का सुकून। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी तो उन्हें भी देखने दे चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। लेमन मैक्स लॉन्ग चले पूरे महीने चमचमा चमचम। अब डिहाइड्रेटेड बालों के दिन हुए खत्म थैंक्स टू द मॉइस्चराइजिंग पावर ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर बाय लॉरियल पेरिस। इसमें शामिल हाइलुरोनिक एसिड जो बालों को इंस्टेंटली मॉइस्चर से भरकर उसको लॉक करे और रखे 72 आवर्स तक हाइड्रेटेड एंड फुल ऑफ लाइफ। इट्स नॉट मैजिक, इट्स साइंस। न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर शैम्पू बाय लॉरियल पेरिस। We're worth it. हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। मुल्तान में अब कारोबार होगा तो डीएचए मुल्तान में होगा। 4 और 8 मरला के महदूद कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग के लिए अभी कॉल करें। DHA मुल्तान, द न्यू बिजनेस हब ऑफ मुल्तान एंड साउथ पंजाब। मेरा सबसे बड़ा डर था रैश का, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने स्विच किया टू पैम्पर्स, जिसमें पहले से ही लोशन विद एलोवेरा है जो कबीर को दिन रात रैश से बचाता है। मेरी ना सुने, आप खुद ट्राई करें, आप भी कहेंगे अब से नो मोर रैश डिसीजन। ट्राई पैम्पर्स। ये देखे बाजी, मुझे तो लगता है कि डीएचए मुल्तान में अगर आज अपना कमर्शियल प्लॉट ना लिया तो देर हो जाएगी। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जबरदस्त प्लानिंग और कमर्शियल मार्केट में तमाम सहूलियात दे रहा है डीएचए मुल्तान। मुल्तान में अब कारोबार होगा तो डीएचए मुल्तान में होगा। 4 और 8 मरला के महदूद कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग के लिए अभी कॉल करें। DHA मुल्तान, द न्यू बिजनेस हब ऑफ मुल्तान एंड साउथ पंजाब। खरीदो आजादी पैक। मैप डूडल निकले तो पैक के पीछे मौजूद कोड करो स्क्रैच। 032122113839 पे बिस्कॉनी स्पेस कोड लेकर करो व्हाट्सएप। जवाब आने पर मैप डूडल की पिक्चर सेंड करो। बम्पर प्राइज,
कोबरा टिकट। Terms and conditions apply. कमिटमेंट टू डिलीवरी के अमीन यूनियन डेवलपर्स कैनाल रोड लाहौर की प्राइम लोकेशन पर यूनियन लिविंग इज रेडी फॉर पोजेशन। लिमिटेड प्लॉट्स इन कैनाल कमर्शियल हब 08,000 9,000 यूनियन लिविंग कैनाल रोड लाहौर। रायवन रोड पर कामयाब तरीन मनसूबाजात के बाद अल कबीर डेवलपर्स पेश करते हैं KSK इंटरचेंज की प्राइम तरीन लोकेशन पर वाक़े अल कबीर ऑर्चर्ड। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता, तरक्याती काम तेजी से जारी। 3 मरला से 2 कनाल तक के महदूद प्लॉट्स, बुकिंग सिर्फ 2.5 लाख रुपए से। माहाना किस्त सिर्फ 8,500 रुपए। ख्वाब नहीं प्लॉट, उम्मीद नहीं यकीन। टोल फ्री नंबर 0800 11399 और प्रोजेक्ट ऑफ अल कबीर डेवलपर्स। समा न्यूज क्लॉक को अब तक पहुंचाने में ताउन किया है। कैसे सब मान जाएंगे। अब आ गई है सुप्रीम, दानेदार में भी बड़ा दाना, बड़ी जायकेदार। It's 12 PM. समा हेडलाइन आप तक पहुंचाने में ताउन किया है। कोलगेट हर्बल मुंह में ठंडक पहुंचाए, दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए नेचुरली। We feel all positivity towards it. Does not mean that everything America does or American thinks we agree with. Of course, we have very healthy disagreement on variety of issues. जरूरी नहीं अमेरिका के साथ हर मामले पर इत्तेफाक हो। मुमालिक के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर इत्तेफाक और इख्तलाफ रहता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब। कहा वाशिंगटन के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं। अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने तवील जंग लड़ी। हमने आलमी अमन के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया। महंगी बिजली की दुहाई, शहर शहर एहतजाज, अवाम का गुस्सा बेकाबू। पेशावर में ताजिर और शहरी सड़कों पर बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। जड़ावाला और ननकाना साहब में भी मुजाहिरीन का पारा हाय। बिजली के बिलों को आग लगा दी। आए रोज मुजाहिरों और पावर डिवीजन में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ने पर मुताल्लिका सूबे के हुकाम से राबता किया जाएगा। बिजली दफातर को पहुँचने वाले नुकसानात का जायजा भी लिया जाएगा। बिहाड़ी में दरिया सतलुज हेड इस्लाम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,51,904 क्यूसिक हो गया। हिफाजती बंद टूटने से 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ रकबा मुतासिर। कहरोड़ पक्का के करीब दरिया सतलुज में 1,10,000 क्यूसिक का रेला दाखिल। मुतादिद बस्तियां डूब गईं। हाई अलर्ट जारी। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 22 फीट से जायद हो गई। चंदा सिंह वाला, बस्ती इब्राहिम, अजीजाबाद और कमालपुरा के लोग महसूर। अटक में दरियाओं के किनारे बसने वालों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। राशन और अद्वियात तकसीम। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। ज़िले खैबर में CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। अली मस्जिद खुदकुश हमले का सहूलतकार मारा गया। ज़ेरे हिरासत अबूजर साथी दहशतगर्दों की फायरिंग से हलाक हुआ। हुक्काम का मौक़िफ़। CTD का लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द गिरफ्तार। अलकायदा के 2 अहम कमांडर काशान और हसन भी शामिल। बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और असलहा बरामद। नवाज शरीफ मुल्की सियासत में हलचल मचाने को तैयार। अक्टूबर में वतन वापसी। लीगी कायद पाकिस्तान आकर कानून का सामना करेंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा जेल में चेयरमैन PTI की सूरत हाल पर तो रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस उस वक्त कहाँ थे जब जेल में नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हो रही थी? क्या ये इंसाफ का दोहरा मयार नहीं?
लंदन में दोनों रहनुमाओं की तफसीली मुशावरत, वापसी की तारीख, सियासी सूरत-हाल और इंतखाबात से मुताल्लिक तबादले ख्याल। आम इंतखाबात 90 रोज में जरूरी ताखीर पर आईनी बहरान पैदा होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़। डिजिटल मरदमशुमारी मुतनाज़िया थी। हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन लेट नहीं हो सकते। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो की सदारत में होने वाले इजलास में आसिफ अली जरदारी और चारों सूबों से रहनुमाओं की शिरकत। एक पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ फैसला देने पर सोशल मीडिया मुहिम का सामना। दुनिया भर से मुख्तलिफ लोग धमकियां दे रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाते गैर मामूली हालात का सामना है। पीटीआई चेयरमैन को सजा सुनाने वाले जज का रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत। हुमायूं दिलावर की दरख्वास्त पर तबादला कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। बटाग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद एबटाबाद की जिला इंतजामिया मुतहरिक। SOPs की खिलाफ वर्जी और हिफाजती इकदाम न होने पर 30 में से 16 डोली लिफ्ट सील कर दी। मुझे तो खैर इन लोगों से ऐसी कोई उम्मीद है वाबस्ता नहीं है। अब तो बस अल्लाह के हवाले है जो होगा। अभी तो ये ओवरव्यू कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। कम से कम ये रोना नहीं रो सकते कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। रोडों की वही हाल है, वही गंदगी, वही गटर बहरे। कराची को बदलने के दावे आसान, मगर हकीकत में काम मुश्किल। मुर्तजा वहाब 2 माह गुजरने के बावजूद मौसर कारकर्दगी न दिखा सके। लोग मेयर की परफॉर्मेंस से मायूस। काम की रफ्तार को टर्बो गियर में डालने का मुतालबा। शहर कायद में लुटेरे बेलगाम डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। न्यू कराची में गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग। टैक्सी ड्राइवर जाबहक। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कॉलेज के तलबा का जिना हाउस का दौरा। कायद के घर की हालत देखकर शदीद गम और गुस्से का इजहार। वाक़े में मुलविस शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। बोले तखरीबकारी मुनज़्ज़म साजिश के तहत की गई। सहूलतकारों और मास्टरमाइंड को निशाने इबरत बनाया जाए। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर। सीपैक मंसूबे की 10वीं सालगिरह पर बड़ी पेशरफ्त। NLC और चीनी कंपनी सिवा लॉजिस्टिक्स का इश्तराक। बैनुल अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के तहत पाक चीन तिजारत का आगाज। कार्गो ट्रकों का पहला काफिला चीन से पाकिस्तान के लिए रवाना। मोदी सरकार का पुलवामा और बालाकोट जैसे वाक़यात दोहराने का मंसूबा। 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए इस मरतबा राम मंदिर अयोध्या पर जाली हमला कराया जाएगा। मारूफ भारतीय माहिर कानून प्रशांत भूषण ने मोदी के शैतानी मंसूबे का पोल खोल दिया। भारतीय अवाम को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के ओछे हथकंडों से बाखबर रहने का मशवरा। 2019 में भी पुलवामा और जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाकर इंतखाबात को मुतासिर किया गया था। मुस्लिम उम्मा का एहतजाज रंग ले आया। डेनमार्क का कुरान मजीद और दीगर मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती पर पाबंदी के लिए कानून साजी का ऐलान। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद और जुर्माने की तजवीज़। बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश होगा। अफ्रीकी मुल्क मडगास्कर में इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब। स्टेडियम में शायकीन के दाखिल होने के दौरान भगदड़। 12 अफराद हलाक, 80 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 11 की हालत तशवीशनाक। ट्रंप की कैदियों वाली तस्वीर पर जो बाइडेन का दिलचस्प तबसरा। साबिक अमरीकी सदर को हैंडसम और हैरत अंगेज लड़ाका करार दे दिया। पाकिस्तान आए और एशिया कप के मैचेस देखें। पीसीबी की दावत पर भारतीय वोट का मुस्बत जवाब। बीसीसीआई के सदर नायब सदर इवेंट के दौरान पाकिस्तान आएंगे। भारतीय वफ़द लाहौर में होने वाला मैच देखेगा। आलमी रैंकिंग में पहली पोजीशन। पाकिस्तान सिर्फ एक कदम दूर। आखिरी वनडे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज आमने सामने। शाहीनों ने क्लीन स्वीप पर नजरें जमा ली। टीम में 4 तब्दीलियां मुतवक्के। Never mind about working it into the leg side. He's tried to go big. Oh, he's tried a little reverse here. What a shot. Will be a no ball. Will be a 6.
यूएस T10 लीग में समा की न्यूयॉर्क वॉरियर्स की एक और कामयाबी, म्यूनिसिपल यूनिटी को 33 रन से हरा दिया। बिलावल हक ने 14 गेंदों पर 38 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। और मलिके कोहसार में रंगों की बहार, मरी में सालाना नुमाइश, 100 से ज्यादा इकसाम के फूलों ने समा बांध दिया। यूरोपी फ्लोरा, डेलिया, स्क्रीमेन, प्रीमोला और जापानी पेड़ बोनसाई मरकज़ निगाह, लोगों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज। कम ऑन माँ, दिस इज इजी। अभी तो हार्ड मोड भी है। इजी या हार्ड? हाँ? कैसे? बताओ कैसे? दांतों के लिए बिस्किट चबाना इजी, लेकिन कैरेट हार्ड। दांतों को 10 गुना ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। That's right. इसीलिए कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन ये दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाए, उनका खोया कैल्शियम लौटाए। जब दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं कनीज़ फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल, इन्हें खींचो, मड़ोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है? क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। मस्ती मसाला यम्मी फुल, आयरन प्लस है मजा फुल, हर बाइट में एनर्जी फुल। खेलो पढ़ो बढ़ो फुल, आयरन प्लस है मजा फुल। नोर लाया न्यू आयरन प्लस नूडल्स, जिसमें है आयरन और फाइबर जो बच्चों को रखे एक्टिव और तेज। 30 रुपए में बचत फुल। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का G20 ममालिक को खुसूसी खत सामने आया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियां बंद करवाने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खत में मकबूजा कश्मीर में मजालिम की तरफ तवज्जो दिलाई। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों को गैर कानूनी हिरासत में लिया जा रहा है। खत का ये मतन सामने आया है। आपको बताते चलें कि खत के मतन के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक के मुहाफिजों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। G20 ममालिक इंसानी हकूक के मामलात को भारतीय हुकूमत के साथ उठाएं। भारत पर जोर दिया जाए कि वो आलमी कवानीन की पासदारी करे। आपको ये भी बताते चले कि खत में ये भी सामने आया है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जाबराना पॉलिसीज जारी रखी हुई हैं। मकबूजा कश्मीर में इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदियां आयद हैं। भारत इंसानी हकूक के मुहाफिजों को निशाना बनाने का सिलसिला बंद करे। इंसानी हकूक के आलमी इदारों को मकबूजा कश्मीर के दौरे की इजाजत दी जाए। भारत पर खुर्रम परवेज और इरफान मिराज की रिहाई के लिए भी जोर दिया जाए। इंसानी हकूक के मुहाफिज खुर्रम परवेज को नवंबर 2021 में बिला जवाज हिरासत में लिया गया था। रवां बरस सहाफी और इंसानी हकूक के मुहाफिज इरफान मिराज को भी गिरफ्तार किया गया। भारत में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में वाज़े इजाफा देखने में आया है। आपको बताएं कि खत के मतन के मुताबिक मणिपुर में सैकड़ों मसीहियों को कत्ल किया गया है। साथ ही साथ इबादत गाहों को तबाह किया गया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसालिम पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का G20 ममालिक को खुसूसी खत, जिसका मतन हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियां बंद करवाने का मुतालबा सामने आया है। इस खत के जरिए मकबूजा कश्मीर में मुजालिम की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है। बिजली के बिलों से अवाम को हाई वोल्टेज झटका। कराची से खैबर तक अवाम तड़प उठे। शहर शहर मुजाहरे हो रहे हैं। भारी भरकम बिल वापस लेने के मुतालबे किए जा रहे हैं। पेशावर के इलाके